Excuse me, can I have your attention, please? Please take your chairs. Fiber since 1988, and then I moved to some other assignment in 2007. मुझे आज भी याद है कि आज से करीब 25-30 साल पहले की बात होगी, एक हम लोग का एनुअल फंक्शन था इंडिया पॉलीफाइबर का। तो मिस्टर ओपी शर्मा जो इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में है, ही यूज्ड टू बी दी होस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द इवनिंग्स। वो उस शाम को नहीं आ पाए थे, तो मजूमदार साहब ने हाथ में मेरे दे दिया माइक की, मनोज तुम कंपेयरिंग करो। आई वॉज वेरी नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ। फिर उसके बाद ऐसा मैं कंपेयरिंग में आ गया कि मैंने सारे प्रोग्राम्स इंडिया पॉलीफाइबर के कंपेयर किए, एंड देन आई मूव टू रैक्रॉन मलेशिया, एंड देयर आल्सो वी यूज्ड टू हैव ऑलमोस्ट 3-4 प्रोग्राम्स एवरी ईयर। वो मैंने कंडक्ट किए, और एक सबसे बड़ा प्रोग्राम मैंने 1500 लोगों का कंडक्ट किया था, जो भारत क्लब मलेशिया ने कराया था, जिसमें 4 कंट्री के एम्बेसडर्स भी आए थे। लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल कंपेयरर नहीं हूं, मुझसे गलतियां होंगी, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्लीज। आई वुड लाइक टू स्टार्ट द इवनिंग विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प, जो हमारे हिंदुस्तान के ट्रेडिशन का एक पार्ट है कि हम लोग किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले दीपक जलाते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नरेंद्र कुमार ऑन द स्टेज, मिस्टर वी.के. अरोड़ा, मिस्टर एस. मजूमदार, मिस्टर यूसी त्रिपाठी, मिस्टर मिनावत, मिस्टर जतिन लुथरा। तब तक मैं आप लोग को एक प्रोग्राम का एक ब्रीफ बता देना चाहता हूं कि आज की शाम में क्या है। हम लोग के पास लाइव सिंगिंग है, एक हाउसी का गेम भी खेला जाएगा। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर मजूमदार टू स्टे एट द स्टेज प्लीज, एंड ही इज गोइंग टू डिलीवर हिज वेलकम एड्रेस। यू मे कम हियर। एक बार थोड़ा वेलकम ताली हो जाए मजूमदार साहब के लिए, कलकत्ता से आए हैं इस प्रोग्राम के लिए। ओवर टू मजूमदार साहब। Namaskar. A very warm welcome to all of you. आज की evening is really memorable because we are having our third reunion
after a gap of 3 years. Special welcome to not only my colleagues, ex-colleagues, but also their lovely spouses, the sponsors, and also contractors, vendors who are associated with the company for a very, very long time. Warm welcome to all of you. I think IPL started somewhere in 82, 83 as a joint sector project with Pickup and PCBL, RP Goenka's group company. And the production possibly it came into production possibly in the end 85 or beginning 86. It's more than 40-45 years. And most of the people that you are seeing today, they joined in 83, 84, 85, 88, 90, 92, stayed for 3 months, stayed for 6 months, stayed for 2 years, 5 years, 10 years. Some are still continuing. But it's more than 40-45 years. I remember the IPL, those days, IPL board used to comprise of people like Anil Malik, Mr. Harshvardhan, and a few others. I don't know whether Mr. Malik is still there, but he's still there. And Mr. Harshvardhan has passed away. But his son, Yasho, we are very happy that he has been associated with us since then for last so many years. We are very happy to see that. Now, going back to the people who had joined then, 40 years back, 45 years back, they have joined together. Maybe they have not met after for the last 10 years, 15 years, 20 years. But still why there's a craving in people that we must meet together. We must spend an evening together. What is that special that we had in that company which still brings all of us together again after 2 years, 3 years, every 4 years? There must be something special which is difficult to fathom, difficult to feel, difficult to define. But I believe it's the culture of that company which was so different, so unique. It was so much human, which has kept the bond together even today. I think the approach was professional. The style was transparent. The dealings, relationships were human. There used to be a lot of teamwork. There used to be mentoring and guidance. That's why possibly we are still connected today after so many years. Isn't that very, very unique? I have been to many companies. I have walked in possibly 7, 8, 10 companies in my life. But I have never spent such beautiful team, company of a team and the professionals together like I had in IPL. And I'm sure the group here will take the mantle forward, and this teamwork, this connection will continue for at least next 10-15 years, so that we can have more and more reunions in future. Let's have a reunion on 2026, and especially the persons who have not been able to come today because of various preoccupations, let us give them the mantle of organizing the program so that we have them also on board the next program. We had the first reunion on 2020, 22nd February, the same day as today. Second was in 2022, 16th March, after COVID. For last 3 years, we couldn't have any program, but finally we are having it today. But during the second or third reunion, we have lost quite a few valuable members of IPL group. Mr. Sati Kukreja, who was the leader
who was a professional, who was a human par excellence. He is no more. He has left us maybe about 2 years back. DC Sampolkar, who was head of marketing based in Bombay. Not everybody knows him, but I think he used to come to Lucknow for marketing meets, and used to be together. We used to spend, I personally used to spend a lot of time with him. Between me, Vicky Arora, we used to spend a lot of Minawat, we used to spend a lot of time. He also passed away about, I think about a year back, 8 months back. Then one more person, I think many of you may remember, Gambhir Prasad Kotiyal, very unassuming, quiet guy. He used to be in refrigeration, who even joined the last reunion in 2022. He passed away about 6 months back, and that's really unfortunate. Wherever they are, I'm sure they must be happy wherever they are. May I request all of you to stand up for a minute to pay a mark of respect for them. Thank you. I think we'll now get into the evening's program. But I think before we get into the program, it will be inappropriate if I don't mention about the reunion core committee members, about them, the kind of hard work they have put in, going to various hotels, restaurants, banquets to find the suitability of this evening. Go to various singers, listening to various songs of theirs to select the singer for the evening, trying to ascertain the quality of food that gets served in various hotels, restaurants, caterers. And most importantly, making a list of people who are likely to attend and calling them up for once, twice, 3 times, 5 times, 10 times, 15 times, and collecting their money and keeping hisab of that, and meeting and these core committee members meeting frequently in spite of their other pre-commitments. I think it's without them, you wouldn't have seen today evening's program. This program wouldn't have seen the light of the day. Let me call all of them on the stage or here so that we can actually give them a special round of cheer and applause. Neeraj Shah. Manoj Tandon. Ashok Arora. Manoj Saxena. Amit Singh. Anil Singh, are you here? I think without the help of these people, the program wouldn't have happened. So let's give them a big round of applause. Our special thanks to Mr. Majumdar. Let's start the program of the evening today. May I request Mr. Kumar to come here and share some of the experiences about IPL. Mr. Kumar, please. Thank you, Majumdar. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you this evening. Before I start, first of all, I'd like to thank the organizing committee, whom Mr. Majumdar had just introduced, for arranging this. Under the leadership of Mr. Majumdar, they have done a fantastic job. And as Mr. Majumdar mentioned, without their lot of efforts, it would not have been possible. And I would say that it is a very great bonding which even lasts today, because we all started long back
as somebody said, 35 years, 40 years back. And that reunion and that closeness continues. It's like a small family, which is very rare in organizations. So I think this being a third reunion, it's a very good feeling one gets that yes, we are organizing this, and I wish that this continues further, whatever years it has to go on and go on, because a lot of you are still very young, so this should go on. And like I'll make one correction what Mr. Majumdar said, that most of the employees started from 85, because this company was registered earlier, but the main from civil work it started in 85. And I also joined in April 85, and I was the 5th employee of this company. And the production started in December 86. But there was a lot of conflict whether it is January 87 or 86. So that was the period. Trial production was in 86 and main production was in 87. And we had to go through lots of ups and downs, I would say. It was a very difficult fight, and this was for all the people. Different departments, each were facing different challenges. We had come at a time when the market was less, and the Reliance also came in, and we had a very big competitor, and they had a lot of advantages, and we had to get our raw material from them. So it was basically a struggle by all the departments, I would say, whether it was marketing, whether it was finance, whether it was operations, whether it was HR. So everyone, because the market was less. So if the market is less, the plant cannot run continuously. So plant had to be stopped. How do we keep people busy? Then if your profitability is not there, you're not able to increase the salaries. So there was some turnover also. But I would say that the strong bonding and the team spirit which kept the people all together, and people struggled together, and that is one of the very big reasons that all, even today, after maybe 35, 40 years, still people are united and together. And they have a feeling of a family. And that is one reason, I would say, because I have visited most of the Reliance plants, and I would say that the culture here, as Mr. Majumdar already explained, the culture was very different. There was no politics. And due to that, I would say this unit is continuing. The Barabanki unit is still continuing and going strong. And I don't think that this unit will stop, because other plants, a lot of plants which Reliance took over have stopped. They were taken over, few years they ran and they couldn't manage it. But this unit and Hoshiarpur unit, 2 units are only running, which were acquired. So this has been only possible due to the efforts of all of you sitting here, because you all made a difference. We all came together, we had to struggle, and we could basically bring this unit. And I would say that it's a wonderful experience here, which has been working with you all for so many years. And I wish you and your families a good health and happiness in the future, because I would say health is the most important thing now. So please do take care of your health and remain healthy. If you are healthy, the happiness will be there. Thank you very much. And Thank you, Kumar sir. Now I'm inviting the people who are sitting here. Anybody wish to share some experience of his life or stint in India Polyfibers? He's most welcome to come forward and share his views.
एनीबॉडी? त्रिपाठी जी की निगाहें कुछ कहना चाहती हैं। जावेद साहब भी आप प्लीज, मोस्ट वेलकम। जावेद साहब किसी इंट्रोडक्शन के मतलब इनको जरूरत नहीं है, इनको सब जानते हैं अच्छी तरह से, परचेज डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। तो जावेद साहब क्या बोलना चाहते हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि कुमार साहब ने और मजूमदार साहब ने बोला कि 40 साल हो गए, 40 साल तक कांटेक्ट में रहना और रियली इट वाज लाइक ए फैमिली, इट इज नॉट पॉसिबल इन दीज एजेस। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे खुखरिया साहब, कुमार साहब, सांगल साहब, मजूमदार साहब, उसमें यह कि दीपक, जुगनू, चांद, सितारे सब एक से बढ़कर एक रहे। They have been soft light, not the sun की जो hard light करता है। उसमें यह है कि मैनेजमेंट was like a river, हम तो दरिया हैं, भेदभाव हम क्या जाने, हमारे लिए तो दोनों किनारे एक से, और जिसके दिल में तू है मौला, उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब एक। एक्चुअली हमारी निगाहें घूम रही बहुत से लोगों को जो आज इस वक्त नहीं है, देयर विल बी सम प्रॉब्लम ऑब्वियसली। ये कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्यों कोई बेवफा नहीं होता सर, कुछ तो उनसे रोज होती है, मुझसे तो सामना नहीं होता। और बहुत जी चाहता है कि सच बोले, क्या करें मगर हौसला भी हो। ये है कि अब लोग चले जाएंगे, आज चले जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ लोगों से हम लोग लखनऊ में रहते हुए नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत अजीब सी बात है। उसमें यह है कि तुम अगर छोड़ के जाओगे तो मर जाएंगे। यूँ करो जाने से पहले मुझे पागल करो। ये जज्बा जावेद साहब ने अभी डेवलप किया है, ये नया है। और जब तक ये परचेज में थे तब तक इन्होंने कभी शेरो शायरी करी नहीं, और करते थे। अभी इन्होंने खैर शुरू किया है। और वैसे भी कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को थोड़ा शेर मानते हैं, तो शेर भी दो तरीके के होते हैं, एक दुर्गा रानी के नीचे वाला भी होता है और एक जू में भी होता है। बट जावेद साहब के लिए एक बार थोड़ा और ताली बजाएं कि जो इन्होंने शायरियां तैयार करी थी वो आज कह डाली। त्रिपाठी जी हमारे बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, और मैं इनको जब भी देखता हूँ कई सालों से, तो काफी अपने आप को मतलब मुझे भी हौसला अफजाई होती है इनको देख करके। त्रिपाठी जी, मोस्ट वेलकम। क्या कहूँ, इस परिवार में आकर इतनी खुशी होती है। मजूमदार साहब ने कहा कि 7-8 कंपनीज में काम किए हैं, मैं भी 7 कंपनीज में काम किया हूँ। इंडिया पॉलीफाइबर, रिलायंस छोड़ के मैं ज्वाइन किया था, बाद में रिलायंस में मैं 19 साल काम किया। बट आज भी इस बैनर के नीचे, आईपीएल के लोगों के नीचे, और कैसे हम लिखते थे इंडिया फाइबर्स लिमिटेड, ये आज भी बड़ी एक मेमोरी माइंड में फ्रेश रहती है। The learnings, if I want to mention, has been enormous. I am an engineer by qualification and never knew anything about the commercials. Even the marketing learning was quite a challenge over here, because working in the Swadeshi politics and then Reliance was altogether a different ball game. So two experiences I would like to share of the marketing first. One was Mr. Murthy. In fact, I was in touch with Murthy and mentioned that we are going to have the reunion, and he asked when it is going to happen. Then I said it is going to be in the month of February, and then he mentioned brutally that this is not fair. You all are going to hold the reunion again without me. So
PK Arora and Jatin will be smiling at me. Murthy one day asked when we used to sign the credit note that we have sold at X price and there is this amount as the credit note that we are issuing. So Murthy, being a HUL person, asked that what is the cut of the marketing? And then I, being a Purviya, I felt it very bad. I said, okay, next time I'm going to tell you how much is going to be the cut in the marketing. So there was a tender in UPSTC and I told Mr. Kukreja sir that Murthy, being a finance person, he must have some flair of the marketing. So why can't he attend the tender along with me in Kanpur? So I came from Lucknow, Delhi, and then we drove down together for attending a tender at Turnbull Clark at Kanpur. The gentleman, Mr. Radhe Shyam Sharma, who was the managing director of UPSTC, he is no more. So meeting got postponed. It was at 7 o'clock in the evening, and Murthy was up and down. That what is this culture? They gave us time and up to 7 o'clock. And then only everybody was called and he asked me that, Tripathi, tell me what is going to be your discount. Then I told Mr. Sharma that, look sir, the highest discount that we give to any customer will be given to you because your chairman is on our board and you pick up his joint venture, they are the chairman. So rest assured, we'll give the best discount. Well, okay, then go, all business given to you. Then in the while coming back, I told Mr. Murthy that we are going to issue the credit note. Now Mr. Murthy calculate what is the cut for the marketing. So Murthy said, you are very smart and you are a dirty person, you spoiled my whole of the day. Then second thing was in marketing, they will close the plant for 6 months and there was a customer in Syntex at Indore. So and Bombay office was not managing them properly and then Mr. Kukreja gave that customer to Delhi region. And I told, I went there, I said, you increase the volume 4 times, he was buying 100 tons. He said, you will take 400 tons from us and reduce Reliance's quantity. Then the gentleman asked that, can you give me discount, can you give me the credit of 6 months? I said, yes, I'll give the credit. I came and told my ex-boss, Mr. Ravi Kapoor, he was wild and even Mr. Kukreja came. And he was also wild that how come you can give the credit of 6 months. And I said that, sir, our plant is closed and material is lying. Instead of interest, customer is going to pay. We are paying the interest, now customer will pay interest and it's a better deal. Then I don't know that the Jatin was there in the management committee at Barabanki or Bala was there. One of you supported, that's why it's a good decision, you've taken a good decision. And then after that, 3 months he said, I'm going to buy on the cash. I went, I said, fair enough. Then again I got a firing that you had given a credit and accepted the check and then you are selling on the... I said, it's better, sir. Our cash flow and sports is going to be better. So these kind of the learning. Then in export and import that I learned. Then the commercial I learned that become my backbone, working for Reliance or working for even the company I'm working for now. So the great learning with the help of our finance people, quality. Mr. Narendra Kumar mentioned that when IPL was taken over Reliance, it was the best plant, best product and benchmarking was there, the IPL for all the norms. So that was my learning and the friendship. I can see the glitter in the eyes of the people, the colleagues, ex-colleagues, whatever you say of the Barabanki and Lucknow. I am ever grateful to all of you. Thank you. थैंक यू त्रिपाठी जी। मैं बताना चाहता हूं कि आज जावेद साहब का जन्मदिन है, तो एक बार थोड़ा और कोई थैंक यू। दो ओकेजन है जिसके लिए हमने पार्टी आज रखी है। मेरी रफीक हयात पीछे बैठी हुई हैं। केक की बोतल खुलेगी। सो अभी अगर कोई और
अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता है तो वी कैन मूव टुवर्ड्स लाइव सिंगिंग. वी हैव सिंगर विद अस. आशीर्वाद, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज कम. Thank you, Manoj. Just I'm giving my introduction. I am संजीव कुमार श्रीवास्तव और हमने IPL को ज्वाइन किया था 1987 में और 95 में क्विट किया था. जब हमने 1987 में ज्वाइन किया था तो उस समय मात्र 21 साल का था और जैसा कि मजुमदार साहब ने, कुमार साहब ने, सबने बोला कि कितनी कोहेसिव कंपनी थी, कितनी अच्छी कंपनी थी, सबको ख्याल रखती थी. तो 21 ईयर्स के भी नहीं थे, हमने IPL ज्वाइन किया था. तो जब हम लोग प्रोडक्शन में थे शुरू में बेलर कटर में, तो हमको याद आते हैं वो दिन कि जब हमारे सुपरवाइजर बोलते थे कि प्रोडक्शन करो, तो हम लोग बोलते थे कि मूड नहीं है. तो इतने हम लोग मतलब इनडिसिप्लिन थे और तभी इसको भी अकोमोडेट किया. उसके बाद में वेयर हाउस में आया और कुमार साहब को रिपोर्ट करना था और ये जैसा कि कुमार साहब ने बताया था कि बीच बीच में प्लांट बंद होता था तो लोगों को खाली रखना आसान नहीं था. तो वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कुमार साहब ने सबने दी थी. उसके कारण हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट में, चाहे वो CP हो, एक्साइज हो, कस्टम हो या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब जगह जाके 2-2 महीना ट्रेनिंग ले ली थी. तो आगे के कैरियर में वो हमको एकदम ओवरऑल डायनेमिक बना दिया. दिस इज द फोरम ओनली. आई जस्ट वांट टू गिव वंस अगेन थैंक्स टू कुमार साहब अंडर हिज गाइडेंस. उसके बाद में जो हमने एक्सेल किया, रिलायंस में ज्वाइन किया था, वो ये कारण है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट फोरम टू गिव ए बिग थैंक्स टू कुमार सर. थैंक यू. Thank you, Sanjeev. So please welcome the singer Pankaj, and Shyam is assisting him in the keyboard. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस प्यार से शाम में मुझे शरीक करने के लिए और यकीन मुझे बड़ा पसंद आता है जब ऐसे ज़हीन लोग और ऐसे तजुर्बेदार लोग सामने सुनने के लिए बैठे होते हैं और कुछ सुनाने का मौका मिलता है. आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी प्रॉपरली. थैंक यू सो मच. एंड एक आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ भी जहन में हो, आपको सुनना हो, आप मुझे बता सकते हैं. मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी फरमाइशों को भी नज़रअंदाज ना करूँगा. फिलहाल एक बहुत ही प्यारे से एक नगमे के साथ, गाने के साथ शुरू करना. एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया. एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया. पहले अपना हुआ करता अब किसी का हो गया. एक हंसी शाम को
फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, वो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी, ना वो समझ सके न हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। वीडियो टेप देख रहा था तो वो उन्होंने कहा था कि नौकरी में कुजीन नहीं बदल सकता, नौकरी में सब्जी बदल सकती है आपके घर की। आज लौकी, कल टिंडा, परसों तुरई खा सकते हैं। अगर कुजीन चेंज करना है तो अपना बिजनेस ही करना पड़ेगा। वेरी राइटली सेड। Thank you, ladies and gentlemen, and then we are going to have a photo session, and after this photo session we are going to play housing. The corner prize goes to Mr. Minawat, but nobody's claiming as a joint winner. No. 7171, 8282, single. So the first row prize goes to Ines Kotwal, 500 rupees. First row. कौन सा रो है? अच्छा, अभी तक इतने प्राइजेस निकले, इनका ध्यान नहीं गया। अपनी का निकला तो पहले उधर से कॉल आया है। वेरी नाइस। फाइनल होने वाला है। ये खेल खेलने के बाद आप लोग ने जो टिकट्स लिए हैं ये रीयूजेबल हैं, इनको प्लीज रीफोल्ड करके वापस कर दीजिएगा। 4141, 1212। वेरी गुड।
Thank you. And the full house goes to Mrs. Narendra Kumar. Congratulations. And now we are left with second full house. अगर क्लेम गलत होगा तो उतना ही पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। So now, ladies and gentlemen, we have the drinks and snacks available behind the other corner of this. गुजारिश करना चाहता हूँ, if any lady wants to say something or want to share her husband's experience of India Polyfiber, how they. Those days of that we were in Lucknow, and we were here from 86 to 97. In counting is just about 11 years. But those were such wonderful periods of our life, and so much so that every time that something happens over here, like last couple of years that you had this get together and I couldn't come, I was feeling very, very bad because I didn't have leave, so I couldn't make it here. और मैं बहुत बहुत मिस कर रही थी। एक ही दिन के लेट मी टेल यू वन डेज इंसिडेंट, एंड उस समय हम बस आए हुए थे लखनऊ और ये रोज बाराबंकी जाते थे गाड़ी में, एंड दैट डे वाज माय एनिवर्सरी। और शुरू शादी बस 2-3 साल हुए थे और ही वाज सपोज्ड टू कम बैक एंड टेक मी कहीं डिनर शिनर बहुत कुछ। और उस समय माय वेडिंग इज ऑन द 22nd of January, सो उस समय उन दिनों लखनऊ में इतने कोहरे होते थे, लाइक फॉग वाज मैडनिंग, एंड he says he'll come early that day because he wants to take me for dinner. तो मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक वो जो मैं गेट पकड़ी खड़ी थी वहाँ पे, that he'll come back and I was all dressed ready and he'll take me for dinner. तो 6 से गए 7 से गए 8 से गए 9, and it was completely foggy. He called up, उन दिनों तो we didn't have mobile, किसी के कहीं से कुछ फोन आया कि they are stuck in the बाराबंकी रोड और पता नहीं आज वापस पहुंचेंगे। मैं सब छोड़ छाड़ के रसोई में घुसे कि कुछ खाना तो बना ले कम से कम when he comes back, and I think they came back at around 11:30-12 o'clock that night. तो मेरा वो एनिवर्सरी डिनर तो मिस हो गया, but at that time the friendships and the bondings, even for others, मैं कुछ सब्जी रोटी भेजती थी, मुझे अभी तो याद नहीं है, बट अशोक बराट कीप्स टेलिंग मी वो जो कद्दू के सब्जी आप भेजते थे ना, वो तो वाज सो टेस्टी। वो क्या डालते मुझे, आई कुडंट कुक एक्चुअली टू सेव माय लाइफ एट दैट टाइम, पता नहीं मैं क्या बना के भेजती थी, बट इट वाज अ वेरी हैप्पी टाइम। आई रिमेंबर ऑल दोज लखनऊ इयर्स to be such happy times, and we used to keep visiting each other, and छोटे बात पे we would go out for some kind of get-togethers. Mrs. Kukreja के घर में तो we would meet very often. So yes, not only for the men, I think for some of us, most of us women who've been here that time, it was a very, very precious time. And thank you IPL, and thank you to all of you who made that happen at that time. There is a special bonding, definitely. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, now we are closing this evening from the stage side, and I would like to invite Mr. UC Tripathi to please come on the stage and give vote of thanks to the audiences and the people who have worked to make this event successful. I think I just want to share a popular feeling amongst people here, which I think I must share with you all.
Everybody wants the fourth reunion to happen in 2026. Is the organizing committee ready? Yes. Please start. See, voter thank is the activity that I would not like to do because it's mesmerizing. One should not leave these kinds of gathering, and I wish that it could continue for the midnight up to midnight. But anyway, firstly, I'd like to thank the organizing committee, and I'd like to invite Mr. Majumdar, Mr. Manoj Tandon, Mr. Manoj Saxena, Neeraj, Ashok Arora, Amit, and Anil Singh ji. Please come over here. क्या करें? So this is third reunion, and under the leadership of Majumdar, I'm not only me but everybody is so grateful to all of you for your untiring efforts and organizing it so well. Thank you so much. Thank you. A big loud applause for them. Getting ready for 2026. Start working tomorrow for next year. Yes. And many thanks to our singers Pankaj and Shyamji. Let us be ready for the cake cutting and enjoy our dinner. Thank you. Thank you, Tripathi ji. I'm inviting Mr. Javed, Mr. Manoj Saxena, Ms. Sonia Saxena. I'm inviting them for here to cut the cake. Congratulations and jubilations. I want the world to be happy with me. Congratulations to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. You are happy as can be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
No me vi en la mirada, quieres descargar mí, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita, चाहत के तो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, तो मानो तो आओ को जाए, उन्हें हम होता गम है क्या, señorita सुनो सुनो, señorita कहते हैं हम क्या, निगाहों से वही अरमान की नगमा है, señorita ये चाहती चल गया प्यार का जादू चल गया हमसे कर कोई चल गया तुम चलने दे तुम चलने दे जानो मेरी जान ओ मैं तेरे कुर्बान जानो मेरी जान ओ मैं तेरे कुर्बान मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान वो तुम क्या जानो हम क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है वो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा गरीबी एक आंसू ये आंसू है मोहब्बत जिंदगी रस्ता चाहते दो मैं जट्टी अमला पगला दीवाना मैं जट्टी अमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते ओ मरती है ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते ओ मरती है जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए
रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, आपका क्या समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। चढ़ा है प्यार का वो रंग, चढ़ा है प्यार का वो रंग, रंगीन हो गई हो। समंदर में नहा के और भी रंगीन हो गई हो। एक मिनट बस, मैं गाना नहीं सुनाऊंगा, एक लाइफ की रियलिटी बताऊंगा। रियलिटी ये है कि आज की तारीख में हर इंसान, हर आदमी के जो बच्चे हैं फॉरेन में हैं और अच्छा कमा रहे हैं, और बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे फादर जो है हमेशा जवान रहें। तो एक ऐसी फैमिली थी, उन्होंने, उनका बेटा बाहर गया हुआ था और वो जो है उसने वहाँ से एक मेडिसिन भेजी और अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ये मैं मेडिसिन भेज रहा हूँ, इसको जो है आप एक टैबलेट खाना और 10 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी। इस टाइप से उन्हें बोला कि मेरे मम्मी पापा हमेशा जवान रहे। तो और 1 महीने बाद मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। तो जब वो 1 महीने बाद जब इंडिया वापस आया तो एयरपोर्ट पे उतरा तो देखा मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आ रहे उसको। तो एक दूर एक जवान लड़की हाथ में बच्चा लिए हुई थी, उसको हाथ हिला रही थी। तो वहाँ गया, कहता अरे मम्मी आप? तो कहता बेटा तेरी दवाई का ही असर है कि मैं इतनी जंग हो गई हूँ। कहते पापा मेरी गोद में है। उन्होंने जल्दी में ज्यादा दवाई खा ली। हाँ सर, एक मिनट। होता क्या ना सर, इस लाइफ में हर हस्बैंड वाइफ की आपस में तकरार होती ही होती है। तो मेरी भी वाइफ के साथ अपना तकरार होती थी। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा गाना सुन रहा था, तो वो गाना आज भी बड़ा पावरफुल है। और जब भी मैं अब गाना अपनी वाइफ को सुनाता हूँ ना, हमारी 99% लड़ाई खत्म हो जाती है। वो गाना कौन सा है, पुराना आप लोगों ने सुना होगा, उसकी 4 लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, ये गाने 4 लाइन याद कर लीजिएगा, 100% प्रॉब्लम सॉल्व। वो गाना है मुकद्दर का सिकंदर का। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में सांस है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। साथ ये छूटे ना, साथ ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओके, थैंक यू।